IVM. Hello and welcome to the Habit Coach podcast. I am Ashdin Doctor, your habit coach, and welcome and join us for the second part of our conversation with Chetan Tambe. We are understanding what is the mindset that it takes to become, a world champion at skipping, at karate, and what is the mindset that it takes to become an athlete. So do join us for this podcast. Like you were saying, in competition when you're skipping and everyone's making fun of you, how do you keep that focus on what it is that you're doing on that task at hand? So there are two players. One will look forward, which is the bad thing, and one will look at his feet. He'll just bend down, he'll look at his feet, he'll feel the beats, कि proper जा रहा है कि नहीं. He'll listen to the rope sound if he's एकदम professional. Nothing else will matter. That's what I do. If I'm doing skipping, I'll look down, I'll look at my feet. I'll just keep doing or that sound, 10 second, 20 second and stop. I just listen to that. I'll count my, और सबसे best चीज खुद का score count करना. क्योंकि अगर इफ यू हैवंट काउंटेड योर स्कोर, अगर आपके स्कोर में कुछ झोल झपाटा हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. तो एक बार हुआ भी था वो चीज. मैं अब तक बहुत नेशनल खेला हूँ और ये रिसेंटली हुआ था व्हेन आई वाज इन 13th or 14th. तो मैं खेल रहा हूँ और एक रेफरी आया था एंड ही वाज फ्रॉम द अहमदनगर. तो मैं कर रहा हूँ एंड ही जैसे ही मेरा खत्म हुआ, ही जस्ट रोट डाउन 60 और मैंने मारा है 87. वाज लाइक कि सर आपने कितना स्कोर लिखा? ही वाज लाइक कि 60. बोला सर आपने गलत स्कोर लिखा है. तो वो मेरे पे भड़क गया. ऑब्वियसली ही इज द रेफरी एंड ही डिडंट नो मी कि ये कौन है क्या है. तो मैं जो मेन ऑर्गेनाइजर है उसके पास गया डायरेक्टली. हाँ चेतन क्या हुआ? बोला सर मेरा स्कोर 60 लिखा है. बोला कौन लिखा? वो खुद भी हंसने लग गया. कौन लिखा? बोला सर आपका रेफरी लिखा है. तो ही वेंट देयर. बोलता है कितना स्कोर लिखा? बोलता है 60. कितनी बार गिना? बोलता सर एक ही बार गिना, एक ही बार मारा है. तो फिर सर बोलते हैं एक बार फिर से मारना पड़ेगा देखो. मैं बोला सर यार अभी मारा है, थोड़ा ब्रेक दे दो. तो काहे का ब्रेक, मार चुपचाप. और फिर मैंने 90 मारा. तो फिर उसके बाद वो रेफरी को सीधा उन्होंने बाहर निकाल दिया. तो मैं उनके पास गया, बोला सर मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैं आपको पहले ही बोला था कि मेरा स्कोर इतना नहीं है. तो आपको थोड़ा कभी कभार आप प्लेयर का भी सुन लिया करो कि क्या होता है. रेफरी अगर आप बनते हो तो थोड़ा सुन लिया भी करो. थोड़ा कोऑर्डिनेशन चाहिए प्लेयर और रेफरी के बीच में. तो फिर वहां से लाइक हाँ गलती हो गया, सॉरी ये वो. तो वैसा होता है. When someone wants to get into the habit of skipping, where should they start off with? Like, what is the practice of beginning this? Like, if I want to learn skipping, I can do 20. Enough. So, to be consistent, if you're doing 20 at a time and you're getting stuck after 20, so what you have to do is you have to do 20 का 10 sets. So, you'll get the rhythm. तो पहले तो सबसे पहली बात रोप के ऊपर हाथ बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है. रोप के ऊपर अगर if you don't know your rope, you can't do skipping. So 20 का 10 sets you can do. Then 30 का 10 sets you have to do. फिर उसके बाद you can play the music and try to match the beat of the music obviously. On that beat you have to jump. So बीच में फास्ट गाने लगाओ, बीच में स्लो गाने लगाओ, बीच में एकदम ही स्लो गाने लगाओ. So वहाँ से you'll started enjoying it. Okay. फिर उसके बाद you can start the skills. Skills के लिए there are a lot of tutorials on YouTube now. So no worries. You have your own list of tutorials that we can watch? Obviously, yes. Where? You have to buy it. Acha. Yeah. So what is the place that you go and buy your... these are all online courses, right? Yeah. It's Jumpro Plaza. There's one website, jumproplaza.in, and I'm tied up with them. So they sell ropes online. Okay. So you can buy rope and there are courses like pre-recorded sessions, 10-20 sessions are there. So you can buy those and you'll get the drive link and you can just try. And it's very basic, like कहाँ से start करना है और कहाँ तक you'll end up. Pura, everything is there. And so someone starting, what is the kind of rope that they should be buying? What is the kind of shoes that they can you just give us a little... Yeah. Like how do you break it up for basic, intermediate and going forward? So if you'll ask me about shoes, so shoes, running shoes will be fine. It should be very lightweighted because if you use the heavy one, you'll hurt your knee or calf, anything. But shoes are essential. Shoes are mandatory. Okay. You have to wear the shoes. So second thing is rope. You can go for the beaded one, which has the beads and which is quite heavy. Not that heavy, but it's heavy so that you'll get the movement of the rope. If you use there are two types of rope. One is beaded and one is PVC. PVC rope is very thin and very lightweighted, and the beaded one is heavier one with the beads, which won't get tangled. The PVC gets tangled a lot. If you're not professional, it'll get tangled. So these are the things. Third thing is never land on your heel. If you land on your heel, you'll injure your knee, back and neck.
because I have been through it. Okay. Yeah, there was no coach, so I have been through it, and I had spondylosis. Wow. So I got recovered through that, but then now And all I of this have... was what, 7th standard? No. Spondylosis 11, 12th में आ गया था, हाँ. And फिर उसके बाद बाइक भी आ गया था, तो बाइक राइड, I love bike ride. I went Goa twice अकेले, ऐसे बस कान में गाने लगा के. I just went Goa, I went Gujarat on bike. So you enjoy those trips? Yeah. Then जैसे मैंने पहले बताया था कि if I'm in stress, then I do sports. So I took the cycle, I went पनवेल. Wow. 50 किलोमीटर, ठीक है. एंड इट वाज सडन प्लान. मैं साइकिलिंग नहीं करता हूँ. आई यूज्ड टू डू इट, बट संडेज को मरीन जाता था उतना ही. यहाँ से मरीन से फिर से जोगेश्वरी. तो आई टुक द साइकिल. आई वाज लाइक वाशी जाएंगे. वाशी आया, बोला पनवेल थोड़ा आगे, पनवेल जाते हैं. पनवेल गया. 50 किलोमीटर्स मेरा उधर ये था, किलोमीटर्स जहाँ पे नोट होता है, दैट वाज देयर. सो आई वेंट 15 किलोमीटर्स, और वहां पे फिर जाने के बाद हुआ अब रिटर्न 50 जाना है, उसका क्या. और पैर पूरे थक चुके हैं. तो मैं एक टेम्पो था वहाँ पे, तो मैं उसको बोला, अंकल मैं पीछे पकड़ता हूँ, आप बस चलाते रहो, विल गो टुगेदर. अंकल ने मेरे को बहुत गाली दिया. आई वाज लाइक, फिर थोड़ा ईगो हर्ट हो गया. बोला गाली दिया, अब मैं पूरा लेके जाऊंगा. आई वेंट पूरा पनवेल से जोगेश्वरी तक साइकिल पे, बिना किसी के हेल्प पे. फिर उसके बाद 2 दिन में बेड पे था. पूरा थाइस भर चुका था, काफ्स भर चुका था. बट देन एंड इट वाज नॉन गियर साइकिल, तो और हार्ड होता है जो चढ़ाना है. तो वो कर लिया था. फिर बीच में एक बार आई जस्ट वेंट जोगेश्वरी टू बैंड्रा रिक्लेमेशन, भागते हुए ऐसे रनिंग के लिए. ऐसे ही कंटाला, बोर हो रहा था घर पे बैठे बैठे, तो बस nothing better to do, na? Just like, chalo, we'll wear shoes and run. बस that's it. That's all you need in sports. No, बाकी चीजों के लिए गाड़ी, पेट्रोल बहुत खर्च होते हैं. It's better you go by running. For most of us, it is the whole other stuff that is more exciting. Acha, beaded rope. Acha, now Google search for 4 hours on what is the best beaded rope to buy. Okay, so you're telling me basics. So shoes mandatory. Yeah. Beaded rope. Yeah. Start. What was Don't land on your heel. Don't land on your heel. Yeah. So these are the 3 things that Main you said things. for beginners. Yes. Anything else to keep in mind? No. Should you listen to music? Should you not listen to music in the beginning? Up to you. Doesn't matter. Up to you. Yeah. People do cardio while listening to music, so why not? Okay, so that's fine. Yeah. And then how do you know when to progress? Like, how do you see your progress going? Is there a chart? Do you have benchmarks saying if you can do this, now you try this. If you can do this, try this. What I'll suggest is, if you're doing skipping as a target, ki I want to achieve this, I want to achieve this, it won't happen. Okay. Skipping is the only game I think you should not focus on. If you'll focus, you'll get stuck. Any moment. ज़्यादा अगर ध्यान दोगे कहाँ पे कितना मार रहा हो, you'll get stuck. Just enjoy the beats. Enjoy it. Basically, if you're doing any skill, enjoy it. नहीं हो रहा है कोई problem नहीं है, just keep trying. That's the whole thing. If you'll focus on it, you're gonna get stuck anyhow. So that is, I think, probably where my problem comes, because I get my brain involved in everything. Exactly. Am I landing correctly? Is the khatak happening on the right thing? That's not a good thing. Is my rope the right length? All those kinds of thoughts keep coming when I'm doing it. So yes. you're saying switch that off. Just let your body do what your body is doing. Yes, exactly. Play the music, listen to music, or just keep doing it. That's it. Atka to atka, doesn't matter. And just start again. Over. Start again. Okay. Don't get into a competition with yourself with regards to this. Yeah. Which is the toughest skill that you've had to learn? That you found the toughest to learn? But you've done all your backflips, handstands, all of those things, right? What is the... There's one thing I want to do, ekdam aisa desperately, but I am not able to do it from past 3 years. Which is? You do skipping on your leg, right? Yeah. People do it on their hands. Like they'll do handstand and they'll pump themselves up. Correct. And then they'll move the whole rope through the body and again land on the hand. Wow. Yeah, I've seen that. Oh my God. So it calls Moneymaker and Jagannath ने वो clear कर दिया है. Awesome. Now game on. Exactly. नहीं, not game on. मेरे से नहीं हो पा रहा है. Injuries बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी. तो I'm like ठीक है यार. तूने कर लिया, मैंने कर लिया, हो गया. Same. The skill's name is Moneymaker. It's called a moneymaker. Yeah, Moneymaker. Okay. And when you're doing these gymnastic wala ones, so you'll practice again without the rope first, get the gymnastic aspect in. Yeah. Then you'll get the rope in and then practice the skipping part. Fantastic. Where do you see our skipping competition going nationally? Like, are there lots of skippers? Is it growing? How is it? It is growing. In the lockdown, it has grown a lot. Like, जहाँ पे I've just checked Google पे कि जहाँ पे it was 7%, now it is around 23%. So it is growing. Skipping is growing. क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तो they started doing it घर पे ही. फिर उसके बाद अगर competition basis पे देखा जाए तो politics बहुत ज़्यादा है. इंडिया पॉलिटिक्स चल रही है, तो नो कमेंट्स. फिर उसके बाद
Delhi ka government is way better for their players. Like they'll provide shoes, tracksuits, everything free. यहाँ से एक ही चीज बुरा है स्किपिंग में अभी फिलहाल ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स एक ही चीज बुरा है अगर एसोसिएशन कंपटीशन हो रहा है देन यू हैव टू पे द फीस एंड ऑल यूल गेट इज वन मेडल एंड वन सर्टिफिकेट विच इज उसका कोई फायदा नहीं है इफ यू वांट जॉब वगैरह उसका कोई फायदा नहीं है सो दैट्स द ऐसा बहुत बुरा चीज आई फील लाइक तो बस वही है कि आगे जा रहा है बट आप अगर जब तक किसी को कुछ दोगे नहीं तब तक कुछ आएगा भी नहीं अगर इफ यू पुट ऐसा कैश प्राइजेस वगैरह देन वो रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा करेगा अगर 2000 भर के मेरे को 50,000 मिल रहा है तो ऑब्वियसली आई विल कम ऑब्वियसली आई विल प्ले आई विल वर्क हार्ड फॉर इट वो चीज नहीं है इट जस्ट you'll get one medal that's it खत्म So how can we make skipping something that is more popular, more like social prevalent in this? You feeling that social media is the main way because you're not starting a separate association, hoppers. No, acha, smile is happening. Okay, fine. After that, we'll have a second podcast. I'll disclose soon. We're gonna take a quick break. See you on the other side. Hello, everyone. It's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Shailesh Paul, Head, Merchant Sales and Acquiring, India and South Asia Visa. They analyze the future of contactless payments in India. On Nankari, Sadaf and Archit talk to food writer and chef Rajeshri Sen about all things sweet. On Big Talk about tiny humans, Devi Shobha and Meghna talk about how parenting can trigger past trauma. On The Longest Constitution, Priya analyzes the arbitrary arrest of several writers and artists with regards to the Information Technology Act. And on Ikka Dukka Economy, Abhinav talks to renowned economist Dr. Arun Kumar about permutations and combinations of tax alterations in India. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms that you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week. Capgemini, Intel vPro, and Intel Future Banao Wonderful with Intel-powered laptops. Welcome back. All right, let's jump into the conversation. Okay, because that is actually how exactly it grows, because I want players to like थोड़ा earn करे इससे क्योंकि sports में earning थोड़ा कम है but मुझे वो समझ गया कि कैसा earn करना है and one sad story I have left सुभाष सर मैं उनके थ्रू कोचिंग देता था पहले but then in lockdown थोड़ा हम लोग का झगड़ा हो गया because of the payment thing obviously sports है payment नहीं आ रहा है तो घर वाले भी गालियाँ देंगे कि क्या कर रहे हो करके तो फिर लॉकडाउन आया एंड उन्होंने खुद का घर लिया ओबरॉय के सामने जिस 3 BHK सब बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है यार मतलब दैट्स द फैक्ट तो आई वाज लाइक सर पेमेंट चाहिए मैं काम कर रहा हूँ एंड आई यूज्ड टू गो ऑफिस एवरी डे ऑफिस इज लाइक 5-10 मिनट घर से दूर बट देन वहाँ पे पुलिस का गाड़ी खड़ा रहता था और मैं चुपके से जाता था तो मैं ऑफिस जाके काम कर रहा था ही सेड दैट आई विल पे यू ये मंथ में बट देन ही डिडंट पे ही वाज लाइक नेक्स्ट मंथ दूंगा नेक्स्ट मंथ का तीसरा मंथ 4 महीने हो गया मेरे घर से गालियाँ पड़ना चालू हो गई लाइक ठीक है मैं खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ एंड देन आई गॉट टू नो कि जहाँ पे मुझे फी अराउंड महीने का 12-15K आ रहा था आई कैन अर्न बहुत ज्यादा उससे इन अ मंथ तो फिर मैंने खुद का क्लासेस चालू किया एंड मेरे साथ जो भी थे जो सर के अंडर थे तो हम लोग ऑब्वियसली मिलते हैं बात करते हैं तो मैं बस बोलता था कि आई स्टार्टेड अर्निंग बहुत अच्छे से मतलब मैं अगर 4 घंटा भी दिन का काम कर रहा हूँ तो भी बहुत मस्त हो रहा है मेरे को कुछ अभी नहीं करना है और एक्स्ट्रा तो शायद से सर तक ये पहुंचा कि मैंने उनको इन्फ्लुएंस किया कि सर को छोड़ के मेरे साथ आओ लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको आना है आओ मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ आ जाओ लाइक अगर नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है घर नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है बात खत्म उनका चल रहा है वो देख लेंगे सो वहाँ पे हम लोग का थोड़ा ये हुआ बट देन सर स्टूडेंट हम लोग अभी अच्छे बट ऑन द ये बेसिस सैलरी और प्रोफेशन बेसिस हम लोग थोड़ा सा ये हो गया यस
Because like most of these sports, especially that are not super popular, Hmm. unless you have your leagues or you have, that kind of Right. money coming in, it becomes very difficult to promote it. survive, yeah. And like you're saying, this is actually a sport that is very social media friendly. Archery is not social media friendly. True that. Like after a while, Fatak won. So this is social media friendly. This is entertainment in itself. I Right. think there's a fantastic opportunity here to grow it. Yes. Superb. So I'm planning to do one competition where people will come from states or international. I don't figure it out yet, but then I'm thinking of it where there will be a prize money of 5 lakhs, 2 lakhs, and 1 lakh. Fantastic. So बस एक ऐसा चल रहा है planning. Have That's a sponsors super वगैरह. goal for people to Yeah, work towards. exactly. Yeah. If I want to build my community, jump rope community, then I have to do something for it. If people are not doing, I'll do it. That's it. That's my aim now. Has to be. Fantastic. And so tell us a little bit more about the coaching part. How can people get in touch with you for this? How can the For learn more? now, I have 2 coaches जो मेरे under coaching कर रहे हैं फिलहाल. तो we are total 3 of people are there in Mumbai. So you can just DM me on Instagram, skip with Chetan pe. I'll get in touch with you. If you want to start classes in your society, then we can work that out. If you want to do private classes, we can work it out. Okay. And Like for people who are listening in who have children, etc., what age should the children join in? From 4 plus can start the skipping. And there's no age limit. I have 3 students who are like 53, 68 and 72. 72, 71 I guess. So all this funda with bad for my knees, is this, it's that, what should I? Myth. Myth? It's a myth, yeah. If you do it properly, it won't happen. Exercises, Hey, you starting do for with 6 warm-up. hours. How are you still standing? I think 6 hours is like a... Because of Subhash sir's training. When we were doing karate, our training was for 2 hours. But हम लोग आते थे 6 बजे, रात को जा रहे 3 बजे घर. कराटे के प्रैक्टिस में 3 बजे घर जा रहे थे, क्योंकि वो बंदा बस प्रैक्टिस लेते जाता था. वो वॉचमैन भी फेड अप हो जाता, वो सो जाता था, स्कूल वाला वॉचमैन. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और स्कूल में सुभाष सर इज द ऐसा बिग अथॉरिटी ऐसा एकदम. तो हम लोग बस प्रैक्टिस करे जा रहे हैं. तो फिर और मार वीर खा रहे हैं. वो वॉचमैन भी एक दिन आके सर को बोलता है कि बच्चों को थोड़ा कम मार दिया करो सर, ऐसा मत करो, रोते हैं बच्चे, अच्छा नहीं लगता है. सर बोलता है बच्चे किसके हैं, उनके माँ बाप नहीं आ रहे, आप क्यों आ रहे हो. तो वॉचमैन भी चुप हो गया. फिर वो उसके वजह से, और सर हम लोग को पानी नहीं देता था पीने के लिए. वो उनके पास तक वो पहुंचा नहीं था कि हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट. तो वो हमको पानी नहीं देते थे पीने के लिए. अगर कुछ चीज क्लियर करना है पहले वो कर लो, उसके बाद मैं वाटर ब्रेक दूंगा, जो जाता था 4 घंटे तक. तो वहां से वो पानी कंट्रोल करने का चीज आ गया था. तो अभी भी मैं अगर प्रैक्टिस करता हूँ स्किपिंग का, मुझे प्यास नहीं लगता है. मतलब मैं अगर ऐसा सोलो कर करके आई जस्ट feel full my need of the water. That's it. So with like skipping is also somewhat like running, right? So in running, when you start off, you do a little and you feel very difficult. Right. And then becomes easy. Then you have to do more to feel that same amount of difficulty. You have to keep doing more to feel the same amount of difficulty. Right. That's how also this whole time Yeah, skipping grows, right? Bhi, yeah. If I want to do 30-second speed, then my routine will be I'll do 30 minutes of skipping continuous. 30 minutes of skipping continuous, and then the time 30 minutes are over, उसके बाद I'll start my 30 seconds. That will be my score. Like वहाँ पे मैं 30 minutes अगर कर रहा हूँ कंटिन्यू इतने आवाज में ये सब में, तो मैं कंपटीशन में जाने के बाद कोई कितना भी चिल्लाऊं, मुझे पता है कि मेरा 30 सेकंड कैसा मारना है. क्योंकि वहाँ पे आफ्टर 30 मिनट्स दैट द स्टेज जहाँ पे मेरा बॉडी थक चुका है, मुझे नहीं करना है और मैं मेरा स्कोर रीच नहीं कर पाऊंगा. स्टिल आई एम ट्राइंग. So that's my 30-second score. So already when you've hit fatigue, at that point of time onwards is when you properly train for it. Exactly. So अगर मैं normal 30 seconds में 90 मार रहा हूँ, that's not my actual score. क्योंकि competition में जाकर मैं अटकता हूँ, वो आवाज से distract हो जाता हूँ, तो मेरा score कम होगा. But 30 minutes मारने के बाद क्या ही हो सकता है, मतलब उतना तो मैं मार ही लूंगा. तो 75 is my score. ऐसा मतलब अगर 75 मारता हूँ तो yeah, that's it. Last 2 questions. One is that, when you talk to athletes, they talk about being in the zone. Yeah. Matlab, everything disappears and this is the only thing that happens. Yes. Does it happen every time? Does it happen sometimes? Do you know how to get into the zone faster? For me, I don't feel like being in zone until it's a competition. If I'm doing skipping and बस skipping करने में मजा आता है मुझे, तो वो zone अपने आप बन जाता है. उसको ऐसा अलग से zone में आने के लिए कुछ चाहिए नहीं है. कॉम्पिटिशन में यू हैव दैट प्रेशर, टीम का प्रेशर, गोल्ड का प्रेशर. गोल्ड तो चाहिए, सवाल नहीं उठता. तो यू हैव दैट प्रेशर, सो यू विल लाइक फोकस वहां से स्टार्ट. लाइक एक पहले स्टार्टिंग व्हेन यू रीच ओवर देयर, वहां से फोकस चालू हो जाता है कि यहाँ वहाँ कहीं नहीं देखना है. कॉम्पिटिशन के 15-20 मिनट पहले मुझे मेरा प्रैक्टिस चालू करना है, वार्म अप एंड ऑल, फिर वहां पे करना है.
दिल्ली में हम लोग का कॉम्पिटिशन होता था नेशनल्स, और वहाँ पे ठंडी चला जाता था अराउंड 2-3 डिग्री। तो अगर रोप तुम्हारा अटका तो तुम्हें जो रोप लगेगा, पेन्स तो यमराज सामने से भागते हुए दिख जाएगा, इतना जोर से रोप लगेगा। तो वो गलती नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 15 मिनट पहले बॉडी वार्म अप करो, रोप के ऊपर हाथ बैठाओ, क्योंकि वो ठंडी में फील ही नहीं होता था हैंडल इतना। तो फिर वो प्रैक्टिस करो, तो बहुत वो कॉम्पिटिशन बहुत ऐसा यादगार कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं उसको। ट्रिपल अंडर्स द स्पीड विल बी सो फास्ट, राइट? सो फास्ट, यस। रोप जब हम लोगों ने वो जो रोप बनाया था उसको कॉपी करने ऑलमोस्ट सबने वो रोप बना लिया, ऑल ओवर इंडिया ने पूरा वो रोप बनाना चालू कर दिया। तो जब कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन इज ऑन वुडन फ्लोर, ठीक है, और बाहर कंक्रीट का अगर जगह है तो पीपल यूज्ड टू प्रैक्टिस ओवर देयर। नीचे से स्पार्क्स निकलता था, इतना स्पीड, और मैंने खुद भी निकाला है, जगन्नाथ ने भी निकाला, नीचे से हम लोग के स्पार्क्स निकलता था रोप से। फैंटास्टिक, इट्स लाइक दैट स्पीड, गॉड स्पीड। लास्ट क्वेश्चन, या हाउ डू यू पुश पास्ट दैट फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट? So like, you know, whenever you're training, most of us stop when that discomfort shuru hota hai. Right. But I'm guessing that you as a competitor have to push past discomfort in order for that growth to take place, right? So how do you mentally push past that? So and don't say Subhash sir, huh? Matlab like, where did this actually come from? No. So I used to watch videos like ऐसा motivational videos जो होता है, तो वहाँ पे there was one line कि your opponent is still doing one more set. तो वो हिट कर जाता है जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। तो इन बैक ऑफ माई माइंड इट विल कम कि अपोनेंट अभी भी एक सेट मार रहा है एक्स्ट्रा, व्हाट यू आर डूइंग। तो फिर वहां से वो सेट चालू हो जाता है। फिर मेरे जैनिल इज माय, विनय, जैनिल एंड मी, वी आर द थ्री मस्किटियर्स। यस, मस्किटियर्स, यस। फिर वहां पे जैनिल के डैड इज काइंड ऑफ मेंटर, तो ही वाज लाइक कि उनका एक ही ये है कि ऐसे भी नहीं हो रहा है, वैसे भी नहीं हो रहा है, करके देख। तो बस मैं कर देता हूँ। वो चीज़ बहुत हिट किया। जब मैंने क्लासेस वगैरह सब चालू किया तो सब उन्होंने भी वैसे बोला, ऐसे भी पेमेंट नहीं आ रहा है, वैसे भी नहीं आने वाला है, क्लास चालू करके देख, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। एंड ही इज अ गुज्जू, तो that mindset is different. Business mindset is different. Yes. You started learning that from him? Yes, totally. So I have one business now. I have classes now. Yeah. Fantastic. Okay, super. How can people get in touch with you? How can people continue talking to you? It's just my Instagram handle, Skip with Chetan, and you can call me. Or mail. Yeah. Perfect. Chetan, thank you so much for coming on the Habit Coach podcast. First podcast. I'm so happy it was with me. Thank you so much for coming. Thank you so much. Best of luck. Lovely. Now, if you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on social media. We are at IVM Podcasts on Twitter and Instagram. If you want to reach out to me, I am at Ashdin Doctor on Twitter and Instagram. We have a brand new habit coaching online course, quizzes, videos, and a lot more on the website awesome180.com. So check it out now. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. We know you love fast food, fast fashion, faster payment, lightning fast internet speed. Then why not fast information? On Think Fast, where we discuss the latest developments in the world of technology, business, marketing, pop culture. With a side of sarcasm and my dad jokes, not just mine. Not mine, Varun. My jokes are funny. So join me, guys, the funnier one, Suchita Salvan, co-founder of LBB. And me, Varun Dugirala, the co-founder of The Glitch, as we think fast only on the IVM network. Fresh episodes out every Wednesday. On the IVM app, website, or wherever you get your podcast from.